ओके सो बच्चों, चलो शुरुआत करते हैं। फटाफट से खुद की जगह पे बैठ जाओ भाई। पिनाकोलन रीअरेंजमेंट पढ़ना है आज, सही है। ये एग्जैक्टली जेईई का टॉपिक हो जाएगा। पहले ये बता दूं कि कौन से चैप्टर में आ रहा है, सही है। चैप्टर नंबर 12 जो अभी चल रहा था ना, उसमें ही एक टॉपिक था जेईई का, पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। सब ध्यान यहाँ पे देंगे, सही है। चलो बेटा शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये पिनाकोल होता क्या है? पिनाकोल होता क्या है, वो सबसे पहला क्वेश्चन। चलो सब ध्यान यहाँ पे रखना। देखो डियर स्टूडेंट्स, पिनाकोल एक्चुअली होता क्या है? तो 20 मतलब वो 20 नहीं, 20 डाइहाइड्रोक्सी, मतलब कि कुछ ऐसा होगा, मतलब कि ये डायोल है। ये क्या है? डायोल। ये डायोल है बेटा, ध्यान यहाँ पे रखना। यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा CH3। आपको जो मन में आए वो ले लो। पर पिनाकोल का स्ट्रक्चर विसिनल कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सी आएगा। गया दिमाग में? देखो बहुत ही आसान रिएक्शन है। यहां पे करना कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट्स, आपको एसिड कैटालिस्ट चाहिए होगा एंड आपको यहां पे बहुत ज्यादा हीट देनी है। जैसे ही बहुत ज्यादा हीट दे दी, एसिड कैटालिस्ट आया, मतलब कि ये डिहाइड्रेशन हुआ। क्या हुआ? डिहाइड्रेशन हुआ। जैसे ही डिहाइड्रेशन हुआ होगा, यहां पर डिहाइड्रेशन में करवा देता हूं, चलो अच्छे से। बहुत सारे बच्चों को डिहाइड्रेशन का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सर डिहाइड्रेशन होता है। जैसे ही डिहाइड्रेशन करवाओगे ना, एक OH को उठा लेना, वहां पे प्लस चार्ज लगा देना, आपका काम तमाम। अब देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बना के नहीं बना। देखो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बना, वो आपको लगा, पर स्टेबल नहीं है। मतलब इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन पॉसिबल है। आप बोलोगे सर कैसे? चलो समझाता हूं। प्लस का मतलब क्या हुआ? प्लस का मतलब हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी। प्लस का मतलब हुआ इससे इलेक्ट्रॉन चाहिए। प्लस का मतलब हुआ रियल में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिखाई देगा, उसकी ओर ये प्लस चार्ज चलता बनेगा। तो ये प्लस चार्ज को देखो, ये जो अपना सबसे प्यारा छोटा छोटा ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है ना, उसके दोनों लोन पेयर के पास ये प्लस चार्ज इस कार्बन के पास जाने की सोच रहा है। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट कार्बन के पास, एडजेसेंट ऑक्सीजन के पास यहां पे आपको लोन पेयर दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन पॉसिबल है। कैसे? देखो यहां पे कुछ ऐसा होगा, यहां पे देखना भैया, अपना काम मत करते रहना, YouTube के बाजू में आए हुए सजेशन पे ध्यान मत दो, यहां पे ध्यान दो, सही है। चलो ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया ना, यहाँ पे था O, उसके बाजू में था H। अब जैसे मैंने इसको शिफ्ट किया तो इस मिथाइल को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, तभी तो ये प्लस चार्ज बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आ सकेगा। प्लस चार्ज यहाँ पे क्यों लेके आए? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकैटायन पॉसिबल था। यहां पे आपको रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकैटायन मिल रहा था, इसलिए आपने प्लस चार्ज यहां पे लेके आ गए। अब कुछ नहीं करना है, रेजोनेंस करवाओगे, लोन पेयर अंदर जाएगा, CH3C, यहां पे आएगा डबल बॉन्ड पे O, यहां पे आएगा H, यहां पे प्लस चार्ज, यहां पे C, यहां पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। अब ये H चलता बनेगा, आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा जो होगा कुछ इस तरीके से, CH3C डबल बॉन्ड O, C, CH3,
CH3 CH3। इस टाइप के स्ट्रक्चर को जो पिनाकोल से बनाया गया, ये पिनाकोल से बनाया गया, इस टाइप के स्ट्रक्चर को पिनाकोलोन स्ट्रक्चर, पिनाकोलोन स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। गया दिमाग में? आया कि नहीं आया अच्छे से समझ में आप लोगों को? तो पिनाकोलोन कैसे बनाना है वो एक बार देख लिया। दूसरा एक रिएक्शन यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने एक फिनाइल लिया हुआ है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे मैंने दूसरा एक, यहाँ पे एक CH3 लिया हुआ है, यहाँ पे एक OH लिया हुआ है, यहाँ पे एक C है, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे फिनाइल लिया हुआ है, यहाँ पे OH है। pH का मतलब क्या होता है? पर हाइड्रोक्सी आयन में फिनाइल रिंग। अब ये फिनाइल रिंग कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है अपना फिनाइल रिंग। मैंने ये फिनाइल रिंग यहाँ पे दिया हुआ है। होगा क्या डियर स्टूडेंट्स? फिर से वही सारी बातें यहाँ पे आएगी। आप सबसे पहले यहाँ पे एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हीट दोगे, जैसे ही हीट दोगे कोई एक OH को उठा दोगे। मैंने यहाँ पे pH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे pH, यहाँ पे OH रखा, यहाँ से उठा दिया तो मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। सही है। अब देखो करना क्या है, प्लस को स्टेबल करने के लिए प्लस यहाँ पे जाएगा, वो सबको क्लियर है। पर अब क्वेश्चन आता है कि माइग्रेशन किसका करवाओगे, CH3 का या pH का? वो आप जानते हो कि ये प्लस चार्ज यहाँ जाएगा रेजोनेंस स्टेबल होने के लिए। वैसा तो अभी आपको समझ में आ चुका होगा, पर क्वेश्चन ये होता है माइग्रेशन किसका करवाओगे, CH3 का या pH का? तो ऑलवेज ध्यान रखना pH का माइग्रेशन फर्स्ट करवाना है। इसका माइग्रेशन सबसे पहले करवाओ तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। यहां पे आएगा CH3, यहां पे आएगा pH को मैंने शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे प्लस चार्ज कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH, उसके बाजू में एक कार्बन, उसके पास pH, यहाँ पे pH, यहाँ पे CH3। अब करना कुछ नहीं है, हाइड्रोजन चला जाएगा, डबल बॉन्ड देना है, बात खत्म हो जाएगी। गया दिमाग में? तो इस तरीके से आप पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कर सकते हो। जो दोनों स्पेशल केस थे वो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिए यहाँ पे। याद रखना ये पिनाकोलोन जो होता है वो मेडिसिन बनाने में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। एंड ये पिनाकोल ये सॉलिड वैक्सी सब्सटेंस होता है व्हाइट कलर का। बस तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर नंबर 12 का एक स्पेशल रिएक्शन बचा था। अब क्वेश्चन ये होता है कि पिनाकोल बनाया कैसे गया, तो उसका मैकेनिज्म याद नहीं रखना। दो एसीटोन के मॉलिक्यूल मैग्नीशियम मर्क्यूरी अमालगम के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो एसीटोन से पिनाकोल का फॉर्मेशन होगा। सही है, एसीटोन से पिनाकोल का फॉर्मेशन होगा। एंड पिनाकोल का डिहाइड्रेशन करवाते ही आपको पिनाकोलोन मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो। ओके, कल फिर मिलेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। Hi guys, today I'm going to show you the mechanism of Pinacolone reactions. This is very common lab experiment in most organic 2 labs where you take some benzopinacol and you heat it to reflux with some iodine as a catalyst and some acetic acid, and you get the product which is benzopinacolone. Notice that this is a 1,2-diol. Let me write that down for you. So benzopinacol is technically a 1,2-diol that's getting reacted, and the product gives you a pinacolone, which is a ketone. Notice the ONE suffix. So you know that your product is a ketone. You can also identify that you have 2 OH groups, and one of the OH group is lost in the final product, while the other OH group is turning into a ketone. And we still have all of our 4 benzene rings. Okay, so let's get started with the mechanism. Okay, so our first step is to protonate one of the hydroxyl groups
You can use either or because they're both equivalent. I'm going to protonate it using the H from my acetic acid. You could have also used your catalyst as your source for protonation, but I think this way is easier for you to see what's going on. So now I have a carbon with the oxygen that's bonded to 2 hydrogen, and it gives you a positive charge on the oxygen because now it has an extra bond. Notice that we have a good leaving group, which is the water molecule. And so our step 2 is to lose the water molecule to give a carbocation, a tertiary carbocation, that is. So I'm going to go ahead and draw that. We're going to lose the water molecule. So water molecule says bye-bye. Okay, water molecule leaves, and we get this structure right here. Okay, we get a phenyl bonded to a carbon. And now this carbon has a positive charge, and the oxygen here is still intact. Okay? Okay, now what you want to keep in mind is that even though this is a tertiary carbocation, it could form even a better carbocation, which is a resonance stabilized tertiary carbocation. So our stability for carbocations are tertiary with resonance beats tertiary by itself, which beats secondary, and you'll never usually see a primary or a methyl carbocation. Okay, those are relatively unstable, so you don't have to worry about that. Okay, so with that said, how can we change this tertiary carbocation, which is already really stable, how can we change that into something even more stable? Notice that if we migrate one of the phenyl ions onto the carbon to make it happy, we get this structure right here. We get a phenyl bonded to a carbon, bonded to, I'm sorry, this one, yeah, I don't know what I'm doing. I messed up. Okay, so this carbon is now bonded to a carbon, which is bonded to 3 phenyls, okay, because we just shifted one of the phenyl onto the carbon. And now this carbon is bonded to the OH, and it carries a positive charge because we just lost the bond that used to be here, okay? So now this carbon is missing a bond, and now it has a positive charge. Now, what you have to realize is that there's a huge difference between this tertiary carbocation and this one. This tertiary carbocation is in resonance with the oxygen, okay? So the oxygen's non-bonding pairs can be in resonance. So the lone pairs can come in to satisfy the octet rule for the carbon. So to draw my resonance, I draw my brackets, my double-headed arrow, and let's go ahead and draw the structure. I still have the phenyl here. Carbon is now double bonded to the oxygen, which is still bonded to the hydrogen, bonded to a carbon, which is still bonded to the 3 phenyls. And notice that now we have the positive charge on the oxygen because now oxygen has this extra bond with carbon, and oxygen usually wants to form only 2 bonds. Now that it forms 3 bonds, we have a positive charge. Okay, let's close our bracket to show that this is our resonance structure. Now let's determine which is the major and which is the minor product. Notice that this structure fills the octet rule for all of our atoms, but this structure does not have an octet rule for the carbon since it has a positive charge and it lacks the octet rule. In here, in this structure, oxygen, carbon, phenols, everybody is happy because we have the octet rule. So this is my major structure, okay? And this is the driving force of the Pinacolone reaction. The extra stability from oxygen's lone pair helps to stabilize the positive charge on the carbon through resonance, okay? So our last step is to deprotonate this H to give you your final ketone product. To deprotonate, I'm going to go ahead and use my
conjugate base from my acetic acid. Here's my conjugate base. Okay, with the negative charge, it's going to come in and pull off the H. The bond is going to go back to the oxygen. This gives me my final product, which is a ketone. Phenyl, carbon double bonded to an oxygen, bonded to a carbon, bonded to D3-phenyl. Here is our final product, benzopinacolone. So what you really want to get out of this whole thing is that the pinacolone reaction occurs because of a carbocation rearrangement that goes from a tertiary carbocation, which is already stable, to a even more stable tertiary carbocation through resonance, which drives this dehydration of pinacol, which is the 1,2-diol, to the pinacolone, the stable ketone product. Hope this helped. If you have any question, give me an email, and I'll leave a link to my email at the bottom of the description box. Thank you.